Okay, bro. Keep your NCERT out, कुछ लोग. We are starting the new chapter today. आपको कल गर्मा गर्म NCERT मिल गया है. मिला ना सबको? मैडम क्यों छुप रहे हैं आप वहाँ पे पर्दे के पीछे? So what's the name of the chapter, Kuchlo? Animal kingdom, right? Can you tell me which part of biology this chapter deals with? Don't tell me zoology and botany. कुछ भी नहीं, वैसा नहीं. No. Yes, it deals with the idea of classification. Okay. So from your school days, what do you understand by classification? What? Differentiation. According to Adibandha. According to what? Characteristics. Chalo, ठीक है. Remember 4 terms before we start with this chapter. Huh? One is classification. There is another term called identification, nomenclature, and characterization. Okay? And all of this is a part of a field of biology which is called as systematics. Some people also call it as taxonomy. They both have separate meanings, but some people also use them as one word. Let us understand first of all what all this means, what I have written on the board. Let's start with this first. What is it, guys? Characterization. That is, when you look at the living organisms, you start describing them. And when you start describing them, that process of description is called as what? Characterization. Okay? So what does characterization include? Description of that particular living organism. आपने उस living organism को बाहर से देखा, उसको study किया, उसको आपने क्या किया? Describe किया. उस description को हम क्या बोलते हैं? Characterization. Okay? The next step will be that in order to scientifically study, you have to give it a good name. Okay? And that process is called as nomenclature. Okay? And in your second chapter, you are going to be taught something called as binomial nomenclature. कि हर एक living organism को कितना नाम देना है, कैसे नाम देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Binomial nomenclature. Okay? So पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसके characters study करेंगे और उसका एक data maintain करेंगे. You also need to give it a proper name, and the naming of that organism we follow binomial nomenclature. Now, what is this binomial nomenclature? Binomial nomenclature was given by a scientist named, taxonomist named Carl Linnaeus or Carolus Linnaeus. He said, हर एक living organism को हमको दो नाम देना है. The first name will be the name of the genus, and the second name will be the name of the species.
So every living organism will be given two names. The first name will be the name of the genus, the other name will be the name of the species. Now what is a species? It's a group of organisms which are similar to each other. They can interbreed and produce fertile offsprings. लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना ही सिमिलर है बट वो लोग आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरब्रीडिंग. एंड व्हाट इज बोर्न, जब उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं दे आर आल्सो सपोज्ड टू बी व्हाट बच्चों फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्व्स. सो इन अ स्पीशीज they are not only similar but they are also interbreeding and they produce what? Fertile offsprings. That is what is called as a species. So when a horse and a donkey mate with each other, okay, they produce a mule जिसको हम लोग बोलते हैं खच्चर. But that mule is sterile. It cannot produce fertile offsprings. आया समझ में? So in this case they don't belong to the same species. तो स्पीशीज का डेफिनेशन में जाने के लिए आपके बीच में सिमिलैरिटी होनी चाहिए. और लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल के बीच में इंटरब्रीडिंग होके जो बेबीज फॉर्म होंगी वो भी कैसे होनी चाहिए फर्टाइल. डोंकी और हॉर्स के केस में जो बेबीज फॉर्म होते हैं वो क्या होता है स्टेराइल होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द सेम स्पीशीज. आया समझ में सबको? गेट माय पॉइंट एवरीवन? ओके. So Carlos has said that इसके पहले जो तुम्हारा नाम देने का स्टाइल था वो बहुत ही लोकल नेम्स के हिसाब से चलता था और लोकल नेम्स हर कुछ किलोमीटर्स के बाद चेंज होते हैं बच्चों. लैंग्वेज के हिसाब से भी लोकल नेम्स क्या होता है चेंज. तो लोकल नेम्स हम नहीं रख सकते, हमको क्या रखना पड़ेगा बायोलॉजिकल नेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. काफी सारे रूल्स है आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बेसिक इतना ध्यान में रखना है इस किंगडम एनिमेलिया में जब भी एक एनिमल का नाम आएगा तो विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम एंड रिमेंबर कि ये जो नाम दिए गए हैं इट इज अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर where the first name is the name of a genus, second name is the name of a species. So what is a species? Species is a group of organisms which are similar, they can interbreed and they can produce what? Which are fertile offspring. एक और बात यहाँ पे अभी, तो फॉर एग्जाम्पल जब किसी स्पीशीज का नाम लेना है या नाम रखना है तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज करें? इंग्लिश, मराठी, ज्योग्राफी, विच लैंग्वेज आर वी सपोज्ड टू यूज? जो भी वर्ड होगा उसको हम लोग को लैटिनाइज करना पड़ेगा. जो भी वर्ड है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों? लैटिनाइज. तो मैंने एक एनिमल को स्टडी किया और उसको मैंने कहा लायन. तो लायन का लैटिनाइज नाम है लियो. देन एक एनिमल को मैंने स्टडी किया जिसका नाम है लेपर्ड और उसका लैटिनाइज नाम है पार्डस. ओके. एक एनिमल को स्टडी किया जिसका नाम है टाइगर, उसका लैटिनाइज नेम है टिग्रिस. तो जो इंग्लिश नाम हुआ है उसको मैंने क्या किया लैटिन में कन्वर्ट किया. तो लायन का लैटिनाइज नाम क्या हुआ चलो लियो, टाइगर का टिग्रिस और लेपर्ड का. अब ये तीनों जो एनिमल्स है सेम स्पीशीज है कि अलग अलग स्पीशीज है? अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन तीनों में ना काफी सिमिलैरिटी है. उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, उनका खाने का हैबिट देखिए, उनका दांत का टाइप देखिए, तो काफी एक दूसरे से क्या है. तो भले ही तीन अलग अलग स्पीशीज है लेकिन आपस में काफी सिमिलैरिटी है. तो अगर लायन, टाइगर और लेपर्ड साथ में खड़ा है और एक डॉग खड़ा है तो किसको साथ में रखोगे आप? लायन, टाइगर, लेपर्ड. और वहीं पे अगर एक समझो एक वुल्फ आ गया तो वुल्फ को किसके साथ रखोगे? डॉग के साथ रखोगे ना? डॉग के साथ. कैट को किसके साथ रखोगे? लायन और टाइगर के साथ. I hope you're getting my point actually. Okay. So what I found out that कि लायन, लेपर्ड और टाइगर इनके बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है. तो मैंने बोला ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है बट दे बिलोंग टू द सेम हायर कैटेगरी
which is called as a genus, and let the name of the genus be what, bachara? Let it be Panthera. So now on, the name of lion according to Carlos Linnaeus का binomial nomenclature is, it will be called as Panthera leo. That will be Panthera pardus, Panthera tigris, and this is called as what? Binomial nomenclature. एनिमल किंगडम मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया बच्चों, एक बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, ये बात समझ में सबको? कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है, तो जूलॉजी बॉटनी नहीं आंसर देना आपको बोलना है सर दिस चैप्टर डील्स विद अ ब्रांच इन बायोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद में आएगा। पर क्या होता क्या सर, इस ब्रांच में सबसे पहले एक जीवाणु के जितने भी कैरेक्टर्स है उसको क्या किया जाए बच्चों? स्टडी किया जाए। स्टडी करने के बाद उसको उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से एक अच्छा नाम दिया जाए। नाम देने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे that were given by Carlos Linnaeus, and these rules are the rules of binomial nomenclature, where every living organism is given two names. The first is the name of the genus, second is the name of the species. तो मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया? Species. फिर क्या बताया मैंने आपको? Genus. तो ये बात समझ में आई? इसके अलावा बहुत सारे रूल है जो चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाए जाएंगे। I hope you got it. Then we have something which is called as what you look what? Identification and classification. Also what bachcho? We have got identification and classification. Now what do you mean by identification? Identification means in simple words to put the living organism with its own kind. ऐसे मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ। To put the living organism with its own kind. इसका मतलब क्या हुआ सर? कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी करो, ऑलरेडी आपने काफी चीजों को क्लासिफाई करके रखा है, अब उस ऑर्गेनिज्म को उसके जैसों के साथ डाल देना, उस ऑर्गेनिज्म को उसके जैसों के साथ रख देना। जैसे ही मैं क्लास के अंदर आया, मैंने बोला किंगडम, आई सेड गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट, तो मैंने आपकी क्लास को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? दो। कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे? जेंडर। तो दो ग्रुप्स मिले, एक है किंगडम गर्ल्स और किंगडम बॉयज। फिर मैंने बोला टॉल वंस विल सिट एट द बैक, शॉर्ट वंस विल सिट इन द फ्रंट, है ना? I further classified your class into how many groups? 2 groups on the basis of your height. फिर मैंने बोला जिनको 90% है मैं राइट में बैठूं, जिसको 95 मेरे लेफ्ट में बैठूं। I further classified into on the basis of marks. तो अब मेरा जो क्लास है वो रैंडमली अरेंज है कि सिस्टमैटिकली अरेंज है ना? कि मैंने कुछ क्राइटेरिया यूज किए, क्राइटेरिया माने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यूज किए, और उसके बेसिस से मैंने मेरे पूरे क्लास को सेम ग्रुप और अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मेरे क्लास में कितनी किंगडम्स हुई? 2, बॉयज एंड गर्ल्स। फिर क्या हुआ? सब किंगडम क्या हुआ? हाइट के हिसाब से। फिर और क्या डिविजन्स हुए? मार्क्स के हिसाब से। अलग लक्षण कैसा नहीं करते? ठीक है। अतः एक नवीन ऑर्गेनिज्म मुझे वर्गा था, ठीक है? I just saw him, not him. I saw it. I saw that living organism. I don't know what it is. Okay, I saw that living organism is tall. Okay, the organism has got beard and mustache. Okay, and I asked its percentage. He said that organism said 95%. अब उसको देख के मैं उसको कौन से ग्रुप में डालूंगा? बॉयज की गर्ल्स में? बॉयज में। कहाँ बिठाऊंगा? आगे की पीछे? पीछे। राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? क्योंकि 95 वाले की तरह है राइट साइड। तो मैंने उसको उसके जैसों के साथ क्या किया? बिठा दिया। मैंने मतलब उसको क्या किया? आइडेंटिफाई। ठीक है। जैसे प्रारंभ स्टार्ट हुआ बच्चों, 2 टाइप के बच्चे आए। एक जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो जीएमसी में जाना चाहते हैं, और जो केईएम में जाना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी एक बीटीएस की आर्मी आ गई यहाँ। ठीक है। और अब जब नया ऑर्गेनिज्म आएगा ना, तो बराबर अपनी जगह ले लेगा। उसको मालूम है मुझे जीएमसी नागपुर जाना है, जीएमसी केईएम जाना है, तो चुपचाप अपने ग्रुप के साथ जाएगा। समझा ना मेरा बात? आया ना? अब एक है लफंगा लफंगी, जिसको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, तो उसको उठा के कौन से ग्रुप में डाल दूंगा बच्चों? बीटीएस या ब्लैक पिंक की आर्मी के साथ डाल दूंगा। तो मैंने उसको उसके साथ क्या किया?
आयडेंटिफाय कर दिया. जा तू तिकडेच. घरचे बोलतात ना अरे ते काय कामाचा नाही, म्हणजे त्याने तुम्हाला काय केलं, आयडेंटिफाय केलं. बघा काय कामाचा नाही. आलं की लक्षात? yes or no? Yes or no? Okay. Then the next step we go to is on the basis of certain criteria. On the basis of certain criteria. You bring about grouping of organisms. And this grouping is called as what, Uchilo? Classification. You heard me what I said? जैसे मैंने अपने क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड किया कि नहीं? On the basis of, अरे बोलो भाई, on the basis of gender. So gender, height and marks are criteria. मे भी आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे गाने होंगे, है कि नहीं कुछ लोग? सब एक ही साथ एक अलग अलग फोल्डर्स बनाए हमने. कौन से बेसिस पे बनाए? आर्टिस्ट, genres, then languages, then आया समझ में? हाँ. तो कभी भी जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो जरूरी क्या बच्चों? क्राइटेरिया सेट करो कि कौन से बेसिस पे आप क्या करने वाले हो, क्लासिफिकेशन करने. बेसिक बात समझ में आई? क्या मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया बच्चों? नहीं. हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेसिक्स के बारे में. The first thing I told you is it belongs to a branch of biology that deals with characterization, nomenclature, identification and classification. To put the living organisms into same groups or different groups is called to put the living organisms into same groups or different groups based on similarities and differences is called identification or classification. To put the living organism with its own kind is called identification. To write the properties and characteristic features is called characterization. To give a scientific name is called nomenclature. So what is classification? Grouping of organisms on the basis of similarities and differences. Madam, what's your name? अब बेटा zero attention pay करो. पता नहीं what is happening with you today. What's going on? Why are you fidgeting with things there? कुछ है? Why are you fidgeting there? Tell me. Okay. Clear हो चलो? पक्का? आया ना? Yes, सच्चा. सही. सही. SAW. सही है, इसका नाम सही. हाँ, उसका नाम सही है. सही? सही है? हाँ. तो आप क्लासिफिकेशन कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? Formation of groups and subgroups according to their similarities and differences. वेरी गुड. तो जो जो सिमिलर रहेंगे सेम ग्रुप में जाएंगे, अलग अलग ग्रुप में जाएंगे? Same. सेम ग्रुप में जाएंगे. ओके गुड. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? Classification based on identifying the organisms. Good. Yes, dear. Grouping of same organisms on specific criteria of type. Okay, Chirag. I'm not getting the एकदम crisp correct answer. Yes. What is identification? Yes, one. Putting the living organism into its own kind. Okay. Putting the living organism with its own kind. Give me an example. So अभी हमने एग्जांपल लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, मार्क्स एंड परसेंटेज, जो उसके हिसाब से जो हाइट पर है वो एक पीछे बैठेंगे वैसा. मतलब अगर एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई लड़की मैंने डिस्कवर की, तो उसको कौन से ग्रुप में बिठा दूंगा मैं? गर्ल्स के हिस्से. उसके परसेंटेज और हाइट के हिसाब से डिसाइड होगा, आगे बैठेगी, पीछे बैठेगी, राइट में बैठेगी, लेफ्ट में. वैसे मैंने कर दिया, मतलब मैंने उसको क्या कर दिया? आइडेंटिफाई कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्या हो चुका था? क्लासिफिकेशन. So what do you do in identification?
You put the living organism with its own kind. या फिर you give the organism its position in the classification table. So we can say giving the organism its identity. No, don't say that. Okay? Sit down. Beto. Chirag, I'm not getting the confidence that you guys will be able to solve this MCQ. Second last bench here. What's your name? What is the name of the chapter? Animal Kingdom. What does it deal with? ये किस चीज से रिलेटेड है ये चैप्टर? Types of animals. हाँ? क्या ठीक है? नहीं, उसे पहले बोल देती बड़ा सुन लेती वो, हाँ? ओह, typical X chromosome. चलो. So where was I guys? Animal Kingdom. The next question is, what is the need of classification? That is the NCERT is asking. Are you clear with these terms, बच्चों? Yes. पक्का? Yes. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको सही पोजीशन देना मतलब क्या? हाँ. ग्रुपिंग करना, उसकी स्टडी करना, उसका नामकरण करना. Next question is, why do you need to classify the animals? That is what the NCERT is asking. Why do we need to classify the animals? Yes, Charan. To study them in a systematic manner. Okay, सबसे पहले there is a lot of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, पशुओं में विभिन्नताएं, बायोडाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स. अप्रोक्सीमेशन ऐसा है, एक अंकल थे, उनका नाम था अर्नेस्ट मेयर. क्या नाम था अंकल का? अर्नेस्ट मेयर. उनका रफ एस्टिमेट है, साइंटिफिक एस्टिमेट है कि द स्पीशीज आर रफली अराउंड 6 to 7 million. Okay, कितने हैं? 6 million for how much? 6 million. And we have described little more than 1.5 million. हम लोग ने अभी तक कितना आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया है? 1.5 मिलियन, जिसमें से मोर देन 1 मिलियन आर एनिमल्स. So out of 10 organisms, 7 are animals. I hope you understood my point, Muchilo. So animal की डाइवर्सिटी इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है. So जब इतनी सारी डाइवर्सिटी को आपको पढ़ना है तो आपको उसको कैसा पढ़ना पड़ेगा? एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना पड़ेगा. And that is why we need this classification of animals. You got my point? अगर मैंने आपसे कहा write an essay on the digestive system of frog, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करो? एक ऐसे लिखो. तो आप क्या उधर तालाब में जाके मेंढक पकड़ के उसका डाइजेशन स्टडी करोगे, लाइब्रेरी में आके बुक निकालोगे? तो लाइब्रेरी में जब आप जाओगे तो हजारों बुक्स ऐसी एक ढेर में पड़ी होती कि अरेंज रहती है. कैसे अरेंज रहेगी? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स. आप कौन से सेक्शन में जाओगे? मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी.
Vertebrate, invertebrate. Amphibians, mammal, reptilia, mammalia. Amphibian में किस में जाओगे? Frog. Frog में किसके जाओगे? Digestive system. फ्रॉग को निकालो. Difficult हुआ कि easy हुआ? अगर वही सब ऐसा पढ़ा हुआ रहता तो? So that is why when you study, you need to classify. And in order to classify, you require what? Criteria for classification. Did you all understand the introduction, Kuchilo? Yes. So which field of biology are we dealing with? Systematics, या फिर taxonomy. And it includes what? It includes characterization, nomenclature, identification, classification. To group the living organisms on the basis of criteria is called classification. बराबर है? To give an organism its systematic position is called identification. To give it a binomial name is called identification. And now we are going to talk about the different criteria which are required for animal classification. तो हमने ये देखा कि इतने सारे जो एनिमल्स हैं उसमें कुछ फीचर्स जो है वो सेम है और वो सेम में भी वो लोग आपस में डिफरेंसेस दिखाते हैं. मेरा लाइन समझ में आया? कि do animals show reproduction? Give yes or no? Yes. But do we also same type of reproduction? No. So can I say I can use reproduction to classify us? Yes, we can. बराबर है? अच्छा. Do we also digestive system? Yes. But same type of digestive system? No. So हम लोग उसको क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं. आया ना? Can we use the type of photosynthesis to classify the animals? Yes. अरे वाह. Another earnest player sitting in the class. Yes, please stand up, black shirt. Tell me, dear, how will you use photosynthesis to classify the animals? Huh? अरे बाप रे. Darwin of the 22nd century. Huh? Lady Darwin. हाँ बच्चा. सुनो भाई. चलो बताओ कैसे यूज करोगे फोटोसिंथेसिस को एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए? बताएंगे आप? तो आप फोटोसिंथेसिस को यूज कर सकते हो एनिमल्स को क्लासिफाई करने? क्यों नहीं? जय, can you use photosynthesis to classify the animals? Yes or no? Why no? Don't show photosynthesis. So you have to choose certain criteria which are shown by the animals, but they are different in everybody. So we can use them as a criteria for classification. Ayana, can I use the criteria how human beings fly to classify you guys? No. Can I use gender to classify you guys? Yes. How many genders are there? Two. Good. So, it is binary. I believe in binary classification of gender. Sit down. Don't trust your YouTube shorts and videos. You want to disagree on this? Okay. Can you just put that on pause? I will say. यही करो बेटा मैं आज के लेक्चर में. ठीक है? Do you all agree with me on this? Yes. On what part? I think so. She doesn't agree with me, है ना? You agree? Now, चलो. What are the different criteria that can be used for classification, guys? चलो, give me some inputs. Ways of reproduction. Okay. Habitat. Very good. Food habits. Yes. Migration. What is that? One place to another.
for food. Okay. Ways of giving birth. Ways of giving birth. Okay. Huh? Body organization. Huh? Vegetation. Blood circulation. Respiration. Okay. So what is the first criteria I am going to choose? But before that, now let me talk about the different sides of an animal. Different sides of an animal. Does anybody have a compass, Muchalo? Who is this? Hello? Animal. It's a quadruped. And Shivinoti. It's an animal which walks on four legs. Animal which walks on four legs is called as a quadruped. Quadra. Char. Ped. Pi. Char payanavati sahara prani. Okay. Now, is this side? Can I say it is facing the sun? Yes. That is called dorsal side. Do you see this side? Right front. Do you see this? That is called anterior. What do you call it? Anterior. Do you see this? Posterior. And do you see this one? These are called the lateral side. Let's go. Lateral side. So give me once again, which is this side? Dorsal, ventral, anterior, posterior, lateral. Once again. Dorsal, ventral, anterior, posterior, lateral. One more time. Dorsal, ventral, okay. Now the quadruped became a biped, walking on its two legs. The sides will remain the same. The sides will remain the same. So which is this side? Ventral. Which is this side? Got my point? Yes or no? Yes. Put our hands on the desk. Huh? I don't allow it in my class. So where were we? Huh? उठे किया घर पे आने के बाद पक्का ठीक है now see so this is an animal. I am talking about the dorsal side. Where are you looking at? ऊपर के नीचे ऊपर So on the dorsal side, remember which side I just mentioned. Which one? Dorsal. There is an elastic, solid, rod-like structure. What my point? Dorsally, there is an elastic, solid. How is it? A rod-like structure. And that is called as the notochord. What is the description of the notochord? Yes. It is mesodermal in origin. Yes, dear. What's your name? Sanskruti. Sanskruti, tell me when I say it is originating, the origin is mesodermal. What do you understand by this? अब एनिमल टिश्यूज बैठे हैं ना, बताइए. What is mesoderm? Correct. So, be confident. Be confident. Huh? I don't need humans on Mondays. Don't worry.
So how many germinal layers are there, बच्चों? Ecto, meso, and endo. So I said that the notochord is ये जरा अच्छे से समझना आप लोग को बच्चों, अभी जो मैं करने वाला हूँ आगे. Now let us use this criteria and I will make two groups first. Notochord absent. Notochord absent. Notochord absent. मतलब इनके लाइफ में कभी notochord है ही नहीं. They are called non-chordata. What are they called? Non-chordata. And in vertebrata. Okay? So what are they, bachalo? Non-chordata. इनके लाइफ में कभी भी नोटोकॉर्ड है ही नहीं. The second group. Don't use your brain, just listen. The notochord is present is one option. The other option is the notochord got replaced by a vertebral column. समझा दो options क्या हो गए? If the notochord is present, then definitely it will be called what, bachalo? The other option is the notochord did not change into a vertebral column. So it is a chordata, but it is an invertebrata. And the second group is the notochord got replaced by bones, which is called as the vertebral column. So they are called as what, bachalo? Vertebrata. What are they called? Vertebrata. So chordata are of how many types? Two types. Chordata and chordata. Vertebrata. Did you all follow what I said? Yes. Okay, everybody? Yes. Nicely understood? Yes. So all vertebrates are बराबर है आया ना. But all chordata are not vertebrates. Similarly, invertebrata can be both chordata as well as non-chordata. Invertebrata is somebody who does not have backbone. Got my point? It can either be chordate or non-chordate. Did you get it? Yes. So invertebrate एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. अगर उनके पास नोटोकॉर्ड है तो उनको बोल देंगे कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट, और नोटोकॉर्ड भी नहीं है तो डेफिनेटली वो हमेशा क्या होगा? इनवर्टिब्रेट होगा. तो दैट विल बी कॉल्ड नॉन कॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट. Did you get the first criteria, bachalo? Yes. And this criteria will be used, okay, for true and false. So I want you to remember it nicely. Shall I go further, bachalo? Yes. We'll move on to the second criteria, and that would be germinal layers. And this particular criteria, I have already told you a part of it. That an organism can either be triploblastic. Today I am going to use one more word. And what is that, बच्चा? Diploblastic. शायद सब लोगों ने ट्रिप्लोब्लास्टिक सुना है ना मेरे से? तीन जर्माइनल लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होता है तो उसके पास एक आउटरमोस्ट लेयर होता है which is called as the ectoderm, and the inner layer which is called as the endoderm. Now listen, there is a non-cellular layer. Non-cellular layer मतलब you remember your basement membrane? Was it cellular or non-cellular? So here also I am using the word
Non-cellular. There is a non-cellular layer which is there in between tectoderm and endoderm, which is called as the mesoglia. क्या कहते हैं उसको? Mesoglia. So such an organism is called as what? Diploblastic. Okay. Why is the mesoglia not considered as a germinal layer? Because it will not give rise to any of the tissues or organs. Did the class follow everybody? Yes or no? Yes. So depending upon the germinal layers, the animal can either be classified as triploblastic or diploblastic. The next criteria for classification is what? What is the next criteria? Wait, it will be the level of organization. Have you studied that in school, Vicho? Yes. So tell me what are the different levels of organization? Cellular level organization, cell tissue grade organization, tissue organ grade organization, and organ system. Okay. The first level, Vicho. Organization. He is saying protoplasmic, but in order to enter into kingdom Animalia, you should be higher than protoplasmic. Amoeba shows protoplasmic. So in the new classification, amoeba is not considered as an animal. Animal kingdom में आने के लिए minimum criteria होना चाहिए cellular level. स्कूल में अमीबा को शायद आप लोग एनिमल्स में डालते थे, पता नहीं क्या नहीं डालते, लेटेस्ट में नहीं डालते बच्चों, क्योंकि अमीबा के पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? प्रोटोप्लाज्म. और अगर आपको किंगडम एनिमेलिया में उतरना है तो बेसिक क्या होना चाहिए बच्चों? मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी मल्टी सेलुलर. ये एक ऑर्गेनिज्म है. ये बॉक्स दिखा सबको? हाँ या ना? ये कौन है? ऑर्गेनिज्म है. और इस ऑर्गेनिज्म के पास देखिए बच्चों, एक सेल है कि अलग अलग टाइप के सेल्स हैं? या ना? So, is it unicellular or multicellular? Multicellular. Are the cells showing division of labor? Yes. सब cells थोड़े थोड़े क्या है? अलग है. So, सबसे पहले तो organism is what? Multicellular. And there is little specialization of cells. But have all the cells come together to form tissues? मतलब have all the circles come together to form one tissue? Have all the squares come together to form one tissue? So we don't see tissue formation. And such an animal will be called as a cellular level animal. So cellular level animal is unicellular or multicellular? What type of cells or many type of cells? But सबके cells सेम होंगे, थोड़े थोड़े अलग होंगे, लेकिन वो अलग अलग cells साथ में आके tissues बनाते हैं नहीं. अब ये दूसरा ऑर्गेनिज्म देखिए जिसमें आप कौन सा लेवल कह रहे हो? टिश्यू लेवल. Do you see this organism? Yes. Is it unicellular or multicellular? Multicellular. Are the same type of cells coming together? Yes. And they will result in the formation of what, Vicho? Tissues. Got it? And the next level of organization you are very familiar. That is organ and the organ system level of organization. बिकॉज़ उसको बताने की जरूरत नहीं है. ये टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. और सबसे हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम्स बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. गॉट इट? ओके. ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स बॉडी प्लान इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट. क्या कहते हैं इस बॉडी प्लान को? मतलब सेल सिर्फ जमा होते हैं.
ऐसे बॉडी प्लान को क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट. द अदर स्टिल हायर लेवल ऑफ बॉडी प्लान is called as blind sac plan, where the organism shows the presence of one opening called as the hypostome, and this is the body sac, and the hypostome is for inlet as well as outlet of water and nutrients. Got my point? So how many openings does this organism show? One. What is that opening called, bachcho? And that hypostome can be used for both what? Entry as well as exit. Got it? The third type, which I have told you before this, and that is tube within tube. Have I told you this in the first few lectures? Yes. Yesterday, Akhar also made a diagram over here, if you remember. Yes. बाहर का एक बॉडी वॉल था, अंदर एलिमेंट्री कैनाल था, दोनों के बीच में स्पेस था जिसको हम लोगों ने बोला था सीलो, और उसको क्या बोले थे हम लोगों ने? ट्यूब विद अ ट्यूब बॉडी प्लान. Yes or no, kids? Yes. One more criteria is symmetry. है ना? स्कूल में किया है ये बच्चों? What are different types of symmetries? Yes, madam. हाँ? यहाँ बोला ना, इसलिए पूछा मैंने आपसे. बोलो. अलग-अलग symmetries क्या होती है? बैठो. हाँ. Bilateral symmetry. Wait. So the symmetry is called. Some animals they don't show symmetry, so we call them as asymmetrical. Some of them will be radially symmetrical, and most of them will be bilateral symmetry. Okay, what's a radial symmetry? You can cut the organism into two equal halves through any plane passing through the center. Through any plane passing through the center is called with symmetry. अगर मैंने आपको एक केक दिया खाने के लिए और उसके सेंटर में चेरी है ऐसे, और इसको बोला दो इक्वल हाफ में कट कर, तो आप उसको कहाँ से कट करोगे? Is this possible? Yes. You will get two equal halves. Yes. This. Yes. This. Yes. This. Yes. So do I get one half or many half? Yes. What? I get only two halves or many half. Half हमेशा दो ही होते ना. How will you have many halves? So how many halves do I get? Two. But the plane of division is one or many, Many. and it has to pass through the Center. that is called which symmetry? Radial. Radial symmetry. Got my point? Now look at this. This is potato. Who is this? Potato. Okay. I told you cut potato into equal halves. Okay. Is this the right way to cut him? No. 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 Then maybe this. No. Let's cut him like this. No. Then how do we cut him? So can I say there is only one plane of division that will cut him into two equal halves? Yes. So in order to get two equal halves, which are mirror images of each other, how many lines of symmetry are there? One. That is called bilateral. Bilateral. There are many others. Biradial also is there, but we'll stick to the NCERT. You got asymmetrical, radial, and bilateral. Any problem in your life, Bachelo? No. Everyone followed up to here at least. Yes. So how did we start with this chapter, Bachelo? Basic. Need to basic. Okay, basic. I told you the meaning of characterization. एक मिनट. Characterization म्हणजे ऑब्जर्व करके उसके डिटेल्स को नोट करना. नॉमेनक्लेचर म्हणजे नामकरण. आयडेंटिफिकेशन मतलब त्याला त्याच्या पोझिशन वरती ठेवायचं. क्लासिफिकेशन गट विभाजन बेस्ड अपॉन समानताएं और विभिन्नताएं. सिंपल लैंग्वेज में बताना.
Why is animal classification required? Because of the enormous biodiversity. अर्नस्ट मेयर का कितना एस्टिमेट है? अराउंड 6 मिलियन. और उसमें से एनिमल्स कितने हैं? सॉरी, रफली डिस्क्राइब कितने हैं? 1.5. और एनिमल्स कितने हैं? ऑलमोस्ट 1 मिलियन. बराबर है. तो हर 10 में से 7 क्या है? एनिमल्स. ठीक. तो उसको अगर पढ़ना है तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बराबर से सिस्टमैटिकली अरेंज करना पड़ेगा. और उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? क्राइटेरिया. तो ये 5 हो गए क्राइटेरिया. सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछ लो. सवाल को पॉज कर दो. Symmetry. What are the 3 types of symmetries that can be used? Symmetrical, trilateral symmetry as well as bilateral symmetry. Okay. Let us use a 6th criteria of metamerism, or more correctly, right, segmentation. Okay. What was the criteria, Chalo? Segmentation. Now, let us study this with an example of Sevatua. Okay, where if you look at the body, it will be divided externally as well as internally into almost similar parts, not exactly identical, but almost similar parts, which are called as metameres. Okay, so we have external as well as internal compartments, where each compartment is called as a segment, or it is called as a metamere. Such a body is called truly segmented. What do you call the body? Truly segmented. Or it is called metamerically segmented. We'll be out of the class now. Huh? The last time I'm telling you. आया समझ में? Nonsense. Such a body will be called what? Metamerically segmented. जहाँ पे सारे segments एक दूसरे से क्या है बच्चों? Similar है. Okay? मतलब काफी सारे organs repeat होते हैं. मतलब यहाँ पे अगर mouth है तो इधर esophagus होगा. लेकिन दोनों किसका पार्ट है? Digestive system का. फिर इधर क्या है? Stomach है. For example, वो भी किसका पार्ट है? Digestive system. तो ऑर्गन सिस्टम्स के पार्ट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. Have you understood the point? So that does not mean कि इधर भी माउथ है, इधर भी माउथ है, इधर भी, ऐसा नहीं. It means that almost all the organ systems are present in every segment. That is what it means. Okay? So is it identical or almost similar organization? Which is found in every segment. Such a body is called as metamerically segmented, or it is called as truly segmented. Is this quite clear, all of you? Yes. The second type is the first type. The second type is, look at this body. Do you see any external segments? No. I'm sorry. The wrong one. Yes. Now it will be clear. Now, do you see any external segments, बच्चों? Externally segments दिख रहे हैं? Yes. But internally divided है कि एक ही cavity है? तो बाहर से ऐसा लगेगा कि segmentation है, लेकिन अंदर segmentation इसको truly segmented बोलेंगे, false segmentation बोलेंगे. So this body will be called as pseudo segmented. Okay? And what does pseudo mean? False. So such a body is called as a falsely segmented or a pseudo segmentation. And the third type is where बाहर भी segmentation नहीं दिख रहा है, अंदर भी नहीं. So that is a proper word बच्चों, unsegmented body. Okay? Do human beings have segments?
Yes. Like for example, we have your head region. That segment is called cephalic. क्या कहते हैं उसको? Cephalic. Then you have a muscular partition which is called as the diaphragm. As a result of which you have a thoracic and a abdominal. Okay? And here you have the hip bone, this one. And this region is called as which region, Bachlo? Pelvic region. So can I divide your body into different parts? Yes. Cephalic, thoracic, abdominal, pelvic. Got it? So सबको? So your heart is present in which region? Your urinary bladder, your brain, your stomach, abdomen. Hello, Sarona? Yes or no? Yes. Okay. The next concept or the next criteria, the seventh criteria for today is what? Embryonic coelom. During embryonic development, we are looking at an animal under a microscope. It shows the presence of this outermost layer that is called as the ectoderm. And do you see the innermost blue one? That is called as the endoderm. And look at the red one. The red one is called as the mesoderm. And now you have mesoderm divided into two parts. That is the outer mesoderm and the inner mesoderm. And do you see a cavity in between the two mesoderms? Yes. This cavity I am talking about. Yes. Can I say it is lined by mesoderm on all the sides? बाहर भी mesoderm है और अंदर भी continuous mesoderm है. Such a cavity is called as a true cavity, true coelom, because it is lined by mesoderm on all the sides. Outer side भी है और inner side भी है. Such an organism is said to be what? Eucoelomate. क्या कहते हैं उसको? Eucoelomata. Here you have ectoderm, you have endoderm. But the mesoderm, is it complete or incomplete mesoderm? Incomplete. It is incomplete mesoderm. But the mesoderm is in pouches. And this cavity is there, but it will be called as a false coelom. So why is it called as a false coelom? Because it is not lined by complete mesoderm. And the mesoderm is found in pouches. Is it continuous or discontinuous? इधर है, यहाँ पे है, नहीं है. तो complete है कि incomplete है? It is in the form of what? Mesodermal pouches. So such a mesoderm is said to be incomplete. Look at the third one. Who is it? Acoelomate. यहाँ पे the coelom is absent because you have outermost what? Ectoderm. Middle is what बच्चों? Mesoderm. Inner is what बच्चों? Endoderm. I hope you got it. आपने एक बात देखा रहेगा कि जो एंडोडर्म है, ये वाला एंडोडर्म है ना एंडोडर्म? उसमें बीच में मैंने स्पेस बनाया है. ये सीलोम नहीं है. ये आपका फ्यूचर गट का कैविटी. ये फ्यूचर आपका गट का कैविटी. गट मतलब अतड़ियां. मतलब ये कौन है आपका? फूड पाइप. वो सबकी जो कैविटी है ना, ये वो है. ऐसा में और किसी बच्चे को क्या लगेगा ये कौन है? सीलोम है ना. ये सीलोम नहीं है, ये फ्यूचर गट है. गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल. गट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल. या उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अतड़ियां. हिंदी में क्या बोलेंगे? अतड़ियां. तो आज कितने क्राइटेरिया किए? नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट इतना ही करने हैं. फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे.
ठीक है, तो तब तक ये बाय हार्ट होना चाहिए हर बच्चे को क्लास के अंदर, ठीक? हाँ, so we'll meet next time. Learn this and come up to here. Huh? There are some of you who are not yet serious. Still in honeymoon period.